जर्सी को कंपेयर टू होल्स्टेन और अदर ब्रीड के ये कैसे प्रॉफिटेबल हैं। पाकिस्तान में क्यों इसको एज अ पैरेलल रखना चाहिए, जर्सी ने पिछले कुछ अरसे से क्या डेवलपमेंट किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फार्मर्स, आज हमारी कोशिश थी कि हम डेयरी वीक में ग्लेन बैरेट को कैच करें, मगर वहाँ पे नहीं कर सके कोविड की वजह से, मगर आज इनसे टाइम लिया है। ग्लेन बैरेट जो हैं ये जनरल मैनेजर हैं जर्सी ऑस्ट्रेलिया के। आज इनसे पूरा इंटरव्यू करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जर्सी कहाँ के पे खड़ी है, पाकिस्तान को जो कि बड़ा ट्रॉपिकल भी वेदर होता है और बड़ा हॉट भी होता है, वहाँ पे जर्सी कैसे वर्क करेगी, यहाँ पे क्यों जर्सी एक पैरेलल ब्रीड है होल्स्टेन के मुकाबले में, और हमें पाकिस्तान में क्यों इसको एज अ पैरेलल रखना चाहिए, यहाँ पे क्यों ये सक्सेसफुल हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे क्यों जर्सी के जो फोकस्ड फार्म है वो क्यों नहीं हैं। ग्लेन से पूछते हैं कि जर्सी ने पिछले कुछ अरसे से क्या डेवलपमेंट की है। इन्होंने हमें वो बुक्स भी दी हैं जो कि इन्होंने कंपैरिजन किया है जर्सी को कंपेयर टू होल्स्टेन और अदर ब्रीड के ये कैसे प्रॉफिटेबल हैं। बाकी हम इनसे पूछते हैं, मैं वही इंग्लिश में ये बात करेंगे, मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स ग्लेन, थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। नॉर्मली हाउ इट वर्क्स, you usually explain and I explain them in Urdu. So you want to introduce yourself a bit? Yeah, thanks, Has, and thank you for the opportunity and invitation to speak to HRM and your farmers in Pakistan here today. Welcome to Dairy House. It's certainly an exciting facility we have here at AgriBio, which houses Jersey Australia alongside with Holstein Australia and Data. And so my name's Glen Barret, General Manager of Jersey Australia. I've been involved in the dairy industry most of my life. Started on a dairy farm and worked as a dairy farmer for many years before moving into the off-farm role. So I've certainly been involved with Data and previously ADHIS prior to Jersey Australia. सो वही ग्लेन की सारी लाइफ तकरीबन डेयरी में गुजरी है, और अच्छी बात जो ग्लेन ने की है कि ये काउस को भी मिल्किंग करते रहे हैं, फार्मर भी रहे हैं। अब तकरीबन 4 साल से जर्सी ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं और उससे पहले ये डाटा जीन के साथ काम करते रहे, तो बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इनका। ग्लेन, वी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। Do you, I mean, in Australia, I know where Jersey stands, but obviously you guys have Jersey as a parallel commercial cow in Australia, parallel to Holstein, right? That's correct. Yeah, that's correct. The Jersey it's the second most populous breed in Australia. The recent national stats have the breed sitting around the 15% of the national herd. Yeah. That's come up from about 10 to 11% sort of 10, 11 years ago, as farmers see the ongoing benefits of Jersey around sustainability, feed efficiency and profitability. So the Jersey cow is a growing breed here in Australia in the same way it is the growing breed across the world. सो ग्लेन का कहना है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो जर्सी ब्रीड थी वो तकरीबन 10 से 11% थी ऑस्ट्रेलियन हर्ड्स में, अब तकरीबन ये 15% के आसपास है और हर रोज़ ग्रो कर रही है बिकॉज इनका वर्क इस पे उस तरह का है। ग्लेन, इन लास्ट 10 to 12 years, I mean, I have that book as well, which compares the data. But if you can explain to the farmers in a sort of a layman language, what Jersey did in last 10 to 12 years, which you think is a probably way to go forward with Jersey?
Well, I think the value proposition of the Jersey cow is the key one there. Obviously, the high components of the Jersey cow in the Australian farming system, obviously we're paid on milk solids, so it certainly has that value proposition. It's a more feed efficient cow. It's a more fertile cow. It's, the project, the Jersey Most Profitable Sustainable Cow Project identified advantages in health traits as well. So, it's the cow that obviously when we look towards the future in sustainability and feed efficiency, it's a cow that suits the market for today and for the future. تو گلین کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں کیونکہ ملک سالڈ پہ کرتے ہیں اور ہمارے بھی ہاں آف کورس جب آپ 13 TS کی بات کرتے ہیں تو ملک سالڈ وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جرسی کو کمپیئر ٹو ہولسٹین یہ تو ویسے پوری دنیا میں پتہ ہے کہ فرٹائل ہے, اس کے ملک سالڈ زیادہ ہے, اس لیے یہاں پہ یوز کرتے ہیں. اور آسٹریلین فارمر آئی تھنک یہاں پہ کافی بٹ ناؤ وی آئی مین اوبیسلی وی فرام پاکستان اینڈ وی وان بی مور پاکستان سینٹرک. Jersey still, I mean, there are parts where Jersey's, I mean, milking, but we still see Jersey as not commercial cattle as compared to Holstein. They still kind of see as a sort of hobby or, Yeah, Sally, I think in Pakistan you can see the cow as a commercial cow. It's certainly got the production capability, to provide for the dairy industry there in Pakistan. It's certainly, the cows here in Australia, I think, genetically they're capable of producing that up to 10 to 12,000 litres of milk per annum with the high components, obviously subject to the farming systems. We probably don't see that average here in Australia because of our pasture-based system, but what we've seen in the Jersey Most Profitable Cow Project too was that the cow's suitable regardless in any farming system. So whether it's a feedlot system or a pasture-based system or a hybrid in between, the cow's adaptable to suit the market or the farming system that the farmer has. سو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ہر جو سچویشن میں جرسی اڈاپٹ کرنے والی ہے اور اوور دا ایئرز اس نے ایسی پروگرس بنائی ہے کہ کوئی بھی فارمنگ سسٹم ہو چاہے وہ گریزنگ کا ہو یا بان کا ہو یہ پروفیٹیبل کاؤ ہے. گلین وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو لٹل بٹ آف مور data in a sort of general way, right? We under barn system, we have a barn system, and then we have a really average system where small farmers have sort of average facility. Where you see under a control feed, you can answer both, like where we 3 times milking, what sort of space you see Jersey in there, like we milk 3 times and a very good feed, a very controlled feed, TMR system, and then we have a small farmers, they probably milk 2 times, but they feed more grains compared to Australian. What sort of production? They want to know the production. What sort of production we should look at from Jersey? Look, I think in that controlled TMR environment, there's no doubt I'd say that the Australian Jersey has that capability to produce into that 10,000 litre mark. And so if you look at the fat and protein milk solids, you're probably pushing up into that 700-800 kilos of milk solids per annum. So if we have 3 times, if we have a 3 times milking and the way we feed, it has a potential to get up to 9.5 as well. Yeah, 9.5 to 10,000 litre production per cow is certainly achievable. We certainly, we've seen cattle from Australia, Jersey cattle from Australia go to Pakistan and achieve those sorts of not Pakistan, sorry, China, and achieve those production levels. So I think certainly confident that the Australian Jersey has that capability to produce, and obviously to the farming system and the management system that you provide. Yeah, and the minimum. The lower end ones? Look, in the pasture-based systems here in Australia, we're probably looking at that, 6,000 to 7,000 litre average, probably a little bit lower than that, into that 560 to 600 kilo of milk solids. سو دونوں سسٹم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مثلاً ہائی اینڈ سسٹم ہے تقریباً 9 ساڑھے 9 10,000 لیٹر تک چلے جاتے ہیں, اور جو ہمارا اسمال فارمر ہے اس کے لیے تقریباً یہاں کے جو ان کے ہیں وہ تقریباً 6,000. ہمارے فارمر تقریباً جو ونڈا ہے وہ زیادہ اچھا ڈالتے ہیں تو تقریباً 7 ساڑھے 7,000 تک اس میں جرسی جا سکتا ہے. ان جسٹ لاسٹ کوسچن آن دیٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ فار مائی سیلف, when you have a Jersey produces 9.5 to 10,000 litres and milking 3, do you think the others have the capacity to last?
I think the Jersey cow has that capacity to last in udders. Like any cow, obviously you've got to manage the cow appropriately. If you drive the cow hard, that you've got that potential for the udder's going to break down earlier in life cycle. But what we see here in Australia is the Jersey cow is statistically lasts longer in herd. So the udders certainly have that capacity to last a distance. Yeah. So यस मैंने इनसे पूछा था कि जर्सी जो 9-10 हज़ार लीटर प्रोड्यूस करती है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लास्ट कर उसका अडर उसको बर्दाश्त करते थे। कहते हैं हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि चाइना में इन्होंने कैटल भेजी थी और वो 9 से 10 हज़ार लीटर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। What sort of space you think Jersey have in terms of crossbreeding? Because in Pakistan is mainly a crossbred country, so we have our own indigenous breed, and then Holstein, and then they. Do you think over there we can have this crossbreeding? Yeah, most definitely. We see the Jersey as a key component of crossbreeding here in Australia. It obviously brings a bit of size back, shortens the size in a cow compared to a Holstein cow. So it brings the size back, adds the components, adds the fertility components to the cow. So certainly encourage that Jersey's used in all crossbreeding programs, and obviously with your native breed in Pakistan, certainly it's an opportunity to drive some improvements and obviously use the breeding values to your advantage. Look what you're seeking in that crossbreeding program, use the breeding values and breed for it. सो वही जो ग्लेन कह रहे हैं कि यहाँ पे ये आम प्रैक्टिस है ऑस्ट्रेलिया में वैसे कि जो हॉल्स्टेन है उस पे जर्सी बुल को यूज़ करना। एक तो उसका साइज़ उसको वापस ले आता है मिल्क सॉलिड्स के लिए, और हाइप और फीड एफिशिएंसी उससे काफ़ी बढ़ती है। यहाँ पे ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जर्सी जो है एज अ क्रॉस ब्रीडिंग के लिए अल्टीमेट है, और इसके रिजल्ट आएंगे भी, बिकॉज काफ़ी फार्मर्स जो हैं हमसे जर्सी का ले गए हैं, हम अपने फार्म पे भी ट्रायल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसने काफ़ी वंडर्स करना, और ये सरप्राइज करेगा कि जर्सी जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इग्नोर्ड ब्रीड है, ये काफ़ी वंडर्स करेगी। एनीथिंग, वी हैव अ वेरी हॉट वेदर, राइट? वी कैन गेट अप टू 50 degrees sometimes, and what do you how you see Jersey functioning in Pakistan? Certainly we think the Jersey cow is more adaptable to heat tolerance, and certainly in the markets here in Australia we certainly see that out in the field. You're more likely to see the Jersey cow grazing on those hot days than the other breeds, and certainly what we identified in the Jersey Most Profitable Cow project is that the core body temperature of a Jersey cow is a little bit lower than the Holstein breed, and obviously the smaller size, so there's this, and the coat collar certainly affects that as well. सो जर्सी ऑफ कोर्स, ये तो आप सबको भी पता होगा, जो जर्सी लवर है मुझसे ज़्यादा पता होगा कि जर्सी ज़्यादा हीट टॉलरेंट है। जर्सी यहाँ पे भी मैं देखता हूँ जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हॉल्स्टेन जो है वो शेड के नीचे जा रही होती है। इवन दो कि मैं हॉल्स्टेन का बड़ा हूँ, मुझे उनकी फैमिलीज़ बड़ी पसंद है, मगर ये रियलिटी है कि मैं उनको देखता हूँ कि वो शेड्स ढूंढ रही होती हैं, और जर्सी है वो ग्रेजिंग कर रही होती है आराम से। और पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है कंपेयर टू अगर हम हॉल्स्टेन करें तो जर्सी डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा अच्छा करेगी। We coming to the end. You think Jersey Australia in last 10 to 12 years worked in a way that you are independent, in a way that, hey, we have our own Jersey way to go? Because the other day we went to Lisa and we saw some amazing cows and amazing udders. But when you look at US proof, we saw JPI. It didn't really reflect, and that's where my farmers get confused with the TPI compared to BPI as well. And when you look at daughters itself, they don't represent that GPI value we saw in US. How you counter that? I mean, you obviously counter that in China, but how would you respond to the boys over there? I think when looking at comparing proofs across any country, you've got to take G by E, or genetics by environment, into the account. So obviously here in Australia, we certainly encourage breeders to look at BPI, which is the Australian National Index, obviously developed by farmers for farmer benefits, and it looks at the benefits and the payment systems of the Australian dairy industry. So we're starting to see some strong growth in BPI here in Australia in the Jersey. It's probably been a bit of instability over the last 4 or 5 years ago. We experienced a bit of instability in the Jersey breed, but we're starting to move past that now, see stability in the proof. So if you're looking at
Australian genetics, look at the BPI, look at the high BPI animals, and we're starting to see some strength and the cattle responding to what those indexes are. But we come back to my question. I know Glen का ये कहना है कि हम उसको नहीं देखते, हम अपनी BPI को देखते हैं क्योंकि उनकी मिल्किंग डॉक्टर्स यहाँ पे होती हैं और हम BPI को ही एज अपना बेंचमार्क लेते हैं. Look, that's fine. Yeah. You do that, and I'm sure there are not many daughters of aussiegold be milking in US. Yeah. But how they categorizing such a good bull in a way that on a paper it doesn't look good, but when you physically look at the daughter, it looks great. Yeah. Oh, look, that's obviously you like to read a proof and see that daughter in the paddock. There's no doubt about it. Every farmer wants that. You obviously see disappointment when the breeding might not deliver the results that you want, but certainly you've always got to go by breeding values, no matter what. And it doesn't always work, let's face it. That's sometimes the luck of the draw with breeding, but obviously using those high index bulls on the Australian proof systems from the bulls here in Australia, you can have confidence that you're going to breed a pretty decent animal for the Pakistan environment. Yeah, so if there's a bull have a US proof, you don't really look into it, you only look at your own proofs because you have a daughter milking in Australia. I look, a lot of farmers here in Australia look at all proofs around the world, and they want, and some of those bulls will test high on all indexes, some don't, and that's just the G by E effect that comes into breeding values. So look at the bull for your environment and look at your breeding objectives and breed for that. So, and you can put a lot of faith in proofs, and sometimes you get the results you want, sometimes you're disappointed, but if you're looking at what your objectives are, and that's where some of the key objectives of BPI is around production, it's around type, it's sustainability and profitability. And profitability is key at the end of the day. The farm fails if it's not profitable, so look for those profitable animals. सो ग्लेन का बेसिकली इस पे यही कहना है कि बेशक बाकी प्रूफ जैसे भी हों, इनको बेसिकली अपने जेनेटिक्स पे देखना है, अपने मेरिट पे देखना है, ये कैसे पेड होते हैं, कैसे इनका ओवरऑल फार्मिंग सिस्टम है, उसको ये अपने अराउंड. तो इनकी बात का बॉटम लाइन यही था कि हम अपने प्रूफ देखते हैं BPI के इसने यहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है और उसी के साथ ये कंसर्न है. Anything you like to say which I didn't cover in this and you like to give message to my farmers? Yeah, certainly we strongly encourage Pakistan farmers to look at Australian jerseys. We certainly see that as the breed, the Jersey cow as the breed for the future. We certainly consider we've got the best Jersey cows in the world here in Australia. We've taken genetics from all across the world and we blend that with our local genetics. We look forward to opportunities to help in develop Jersey in Pakistan as well. So if there's opportunities to visit Pakistan and help support growth in jerseys through a trade mission or an event or an activity, we certainly look forward to doing that with HRM and Genetics Australia at some point into the future. थैंक्स फॉर सेइंग दैट. सो ग्लेन ने ये कहा है कि फ्यूचर में भी जब हमें चांस मिला हम पाकिस्तान में जाएंगे और हमारा ये कोशिश है कि हम जो ऑस्ट्रेलियन जर्सी है हम उसको वर्ल्ड्स की वन ऑफ द बेस्ट जर्सी कंसिडर करते हैं. उसकी वजह ये है कि इन्होंने वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट, ये अक्सर मुझे भी मैसेज आता है कि आप ऑस्ट्रेलियन बुल को कह रहे हैं इसका तो सायर वहाँ से होता है, तो क्यों नहीं दुनिया के जो भी बेस्ट जहां से भी बुल मिलता है ये लेते हैं, उसको फिर अपने जो डैम है या अपने जो इनके जेनेटिक्स है उससे ब्लेंड करके अपनी सूटेबिलिटी के लिए बनाते हैं. तो हमें क्या उससे एडवांटेज है कि हम जो इन्होंने बेस्ट क्रिएट किया होता है हम उसमें से चेरी पिक कर सकते हैं. और यही अभी ग्लेन भी कह रहे थे कि वर्ल्ड की जहाँ जहाँ से इनको बेस्ट बुल मिले जर्सी के लिए इन्होंने अपने फार्मिंग सिस्टम के हिसाब से उसको ब्लेंड किया. और मुझे नहीं लगता कि हमारा फार्मिंग सिस्टम को इनसे ज़्यादा मुख्तलिफ है. मिल्क और पेमेंट में जो प्रोटीन है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग में जो जैसी फर्टिलिटी वगैरह इनको चाहिए तकरीबन सेम है क्योंकि वेदर भी सेम है. तो इन ग्लेन से काफ़ी दिनों से जब से मैं आया था इनसे टाइम लेने की कोशिश कर रहा था, आज इन्होंने टाइम भी दिया और इनको इनका
انکریج بھی کیا کہ پاکستان میں آئیں اور فارمرز کو ہیلپ کریں ہمارے ساتھ کہ جرسی بریڈ ایک پیرلر بریڈ بنے، تاکہ وہ فارمر جو کہ اگین میں کہتا ہوں جو کہ ایکسپینسو اینڈ نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے آئیڈیل بریڈ ہے، 7 سے 8 ہزار لیٹر دے گی، جلدی پریگننٹ ہوگی اور پروفیٹیبل دے گی. اور وہ فارمر جن کے پاس 500 یا 1000 یا کارپوریٹ ڈیری جن کے پاس ہولسٹین ورکنگ ہے، ان کے لیے پرفیکٹ ہے کہ یہ جرسی کو بھی ایز اے پیرلر بریڈ رکھیں. یہ ڈیفینیٹلی زیادہ نہیں تو اس کے پیرلر ضرور پروفیٹیبل دے گی. ان کی بکس اور ریسرچ جو کہتی ہے کہ یہ زیادہ پروفیٹیبل کاؤ ہے، بٹ آپ اس کو ایز اے ٹرائل بیس رکھ کے بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.